शुरुआत उसी से होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वो उधर भारत माता की, इधर भी भारत माता की। अब जोश आया। गुजरात के कर्मयोगी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, बहुत ही ऊर्जावान और नौजवान, जिन्होंने अभी अपने भाषण से एक नया बेंचमार्क सेट किया, ऐसे श्री हर्ष भाई सांघवी जी, उप मुख्यमंत्री जी, साथ ही मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवड़िया जी, उपस्थित सभी अधिकारी बंधु और इंडस्ट्री के सभी कैप्टन्स जो मंच पे भी हैं और मंच के साथ भी हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। जो जापान से आए उनको ओहाई गोजाइमास। साथियों, आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पर एक बहुत बड़ी जर्नी का पहला स्टेप लिया गया। टुडे वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन आवर हिस्ट्री, in our industry, in the way our semiconductor journey is going to be written in our country. Honorable Prime Minister saw this dream that India should become a semiconductor nation. This is not the first time India has seen that dream. We have seen that dream in the past also. But the way our Prime Minister clearly laid out the policy, focused on execution, and meticulously followed up each and every part of this journey, that is what really led to the culmination of this journey in the first major step yesterday. Thank you, Sanjay, for starting this first plant of Micron in India, in Sanand here. I was sharing with Harsh Bhai and Honorable Chief Minister yesterday that when we made the first presentation to PM in 2021, we had sought a time of 45 minutes. But our Prime Minister that day spent almost 3 hours with us going through each and every detail of that program. That's the kind of commitment that our Prime Minister has shown for semiconductor mission. And that is the result. That is why his vision, his focus on execution, his clear commitment, and that commitment is followed up with lots and lots of efforts by the state government, for which I really would like to thank Honorable Chief Minister, sir. Your meticulous follow-up, your continuous persuasion, and each and every member of your team who worked on this, along with the Government of India's team, as one team to make that successful vision be here on the ground. So thank you so much to each and every person who has given your huge efforts in this journey. This journey of last 4 years is a journey where we have started a totally new industry in our country. And starting a totally new industry means getting that entire ecosystem in place, understanding that new journey. It was a very steep learning curve. And we were very pragmatic. We knew that we are starting a new industry which is extremely complex. I give this example that if you want to write your name on this nail of the thumb, it's okay, you can develop that skill of writing the name. But if you have to write the entire Ramayana on this nail, that is what semiconductor industry is. That kind of precision is required, and that is not possible without the extremely complex ecosystem that comes with it. That's why we decided to first learn to walk before you run. That was the principle we followed. Very pragmatic principle. Learn to walk before you run. So that first principle of learning to walk is now done. That first principle is completed. That first objective is achieved. Now the time has come to learn to run.
and run at a good pace so that we can have this journey for many, many years in our country. Our next step will be Semicon 2.0. And Semicon 2.0 will be totally reverse of the Semicon 1.0. Semicon 1.0 was focused on getting the manufacturing facilities in India. We got that. We have 10 plants. First plant started commercial production yesterday. Very soon the second plant will also start the commercial production. I heard that the product qualification is already done. I won't take the name here. Let that be a quiz for, let that be a surprise for you. But that will probably happen in next one and a half months. So, in the Semicon 2.0, our priority number one will be design ecosystem, so that the deep tech startups, they get the opportunity to develop the next Qualcomm, the next Broadcom, the next NVIDIA, and it's not going to be an easy journey. It's going to be a very, very humongous task. We understand the complexity of it. That's why we are very realistic and very pragmatic about it. That will be our topmost focus in the Semicon 2.0, starting a deep tech startup ecosystem which focuses on semiconductor design, which creates those innovative products which can then be manufactured in our fabs. The priority number two will be getting the equipment manufacturing and equipment design ecosystem in our country. We will manufacture chips. We will also manufacture the machines which are used in manufacturing chips, and we will also manufacture the materials which are used in manufacturing chips. That is the focus of our Semicon 2.0. The material ecosystem, the machines ecosystem, the equipment ecosystem, the testing and validation ecosystem, that has to take strong roots in our country, because as our Prime Minister has always told us, look at a 20-year journey. Don't look at a 4-year, 5-year journey. This is a 20-year journey. So in a 20-year journey, to be successful, the foundation has to be very strong. And that foundation will be strong if we have the entire equipment and material and testing and validation ecosystem well established in a country. We have seen the example of Japan. Japan could very quickly pick up from its glorious past because it has the ecosystem. If it did not have the ecosystem, then from 45 nanometer which it used to manufacture decades ago, it wouldn't have been possible for Japan to go to 2 nanometers today. It's possible because of that ecosystem. We learned that. And because of that learning, in our Semicon 2.0, our focus is going to be equipment and material testing and validation as our second biggest priority. The third big priority will of course be talent, which has been a very important priority in the first version of Semicon also. In the first version, we promised 85,000 engineers to be trained in semiconductor design over a period of 10 years. Happy to share with you, in the 315 universities where we have world's latest EDA tools, Cadence, Synopsys, Siemens, students are actually designing chips. Those chips are manufactured in Mohali, a small laboratory that we have, SCL Mohali. Those chips are tested for actual functioning. And today, from Assam to Gujarat, from Kashmir to Kanyakumari, university students are designing chips. Tell me, industry champions, how many colleges or universities in the world can claim
that their undergrad and grad students are actually designing chips which get manufactured and get validated as final product. I asked this question in Davos, not more than double digit, definitely not more than lower 3 digits in the entire world. And here in India, 315 universities which actually have these capabilities. So the 85,000 talent target over 10 years has been achieved in 4 years itself. Ajit ji, what is the talent gap which is going to be there in the trillion to 2 trillion capacity? Any numbers, broad numbers? 2 million. 2 million? Did I hear it right? 2 million talent gap will be there as the semicon industry globally moves from its current 800, 900 billion to 1 trillion to 2 trillion level. 2 million. Young friends present here, Harsh bhai, 2 million gap has to be filled from India. That 2 million means opportunities for our youth. That 2 million gap means opportunities for our students. That 2 million gap means that is where our youth will get that next huge wave of employment which will come in the semiconductor industry. And we are prepared for that. This 315 university number, now we will take it to 500 universities. Each and every state will have so many universities and colleges where the students get trained in semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation, and that creates the huge opportunity, the huge continuous stream of opportunity for our youth. That's our focus in Semicon 2.0. Friends, this long journey, I thank all the participants in this journey, and I would especially thank the AI Summit investment commitments which have come, $250 billion investments in infra layer, and $17 billion in deep tech VC funding. The second one is more important than the first one because that is going to develop, that is going to create those next round of deep tech startups which our country deserves to bring in the world. The way our Honorable Prime Minister has provided tax incentives up to 2047. Have you heard of any other country which has given policy certainty? And these times are very interesting times. Policy certainty is something which is so very important. Till 2047, we have tax incentives for data centers. And that means the entire world's data can now come to India. We have a very strong IT industry in our country. The IT industry knows how enterprise architecture works. So the IT industry which provided software services in the past can now provide AI-based services going forward. The same IT industry which can go into a banking company, go into an insurance company, go into a manufacturing company, go into a logistics company, understand the architecture and provide the technology services. That IT industry can now provide the AI-based services. The foundation for bringing the entire data of the world to India has been laid by our Prime Minister in the budget, where incentives up to 2047 have been given for setting up data centers. I'll request Gujarat also to take this big opportunity because you have surplus power, you have clean power, and the commitment and the willpower, more as important as the clean power, it is the willpower
which makes things move, that is there in the government of Gujarat. So take this opportunity of bringing data centers to Gujarat. This trio of AI, semiconductor and electronics manufacturing, and just to share with you, electronics manufacturing used to be just about 2 lakh crore, 2 trillion rupees industry just a decade ago. Now it is 12 trillion rupees industry, 12 lakh crore rupees worth industry, and 2.5 million people are employed in it. 25 lakh persons are employed in the electronics manufacturing industry. And it is growing at CAGR of 20% plus. It's an exponential growth in electronics manufacturing, with components, with materials, with capital equipment, with final products, with finished goods. Practically the entire ecosystem is coming to India, and that is going to take the next phase of growth in the coming 3 to 4 years. So be a part of that, be a part of this trio of AI, semiconductor and electronics manufacturing. Friends, thank you so much for being a part of this journey. This journey has just begun. The next few years are going to be the years of growth in electronics. मेरे साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवाडिया, राज्य के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, माइक्रोन कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी डॉक्टर रणधीर ठाकुर, आईएसएम के सीईओ श्री अमितेश कुमार सिन्हा, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, सेमी ग्लोबल के प्रेसिडेंट और सीईओ श्री अजीत मनोचा, काइनेक टेक्नोलॉजी के एमडी श्री रमेश कानन, उद्योग विभाग के अधिक मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्रीमती पी भारती, सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से गुजरात में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का यह गौरवपूर्ण आयोजन है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से साणंद में माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ हुआ है। आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने भारत के टेक्नोलॉजी युग को रिवॉल्यूशन का शंखनाद किया है। ये दोनों अवसर इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्री आदरणीय श्री मोदी साहब सेमीकंडक्टर सेक्टर में देश को एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय श्री मोदी जी के विजन से 21वीं सदी का भारत आज सेमीकंडक्टर, एआई, डीप टेक, मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत पॉलिसी से प्रोडक्शन तक बदलाव की तीव्र गति से अपना आगे बढ़ा रहा है। आज से शुरू हो रही सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 भी भारत के ग्रोथ इंजन गुजरात को टेक इंजन ऑफ द वर्ल्ड बनाने का संकल्प है। इस कॉन्फ्रेंस से गुजरात एक मैसेज देना चाहता है। गुजरात में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल विल भी है। अब सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी गुजरात फास्ट मूवर बनने जा रहा है। आज विश्व में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के नए स्थान, नए पार्टनर्स और नए अवसर तरासे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिसी मेकिंग, टेक्नोलॉजी आधारित विकास को प्राथमिकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण भारत ग्लोबल कंपनीज की पहली पसंद बना है। जब विश्व के निवेश भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं
तब उनकी फर्स्ट चॉइस गुजरात रहती है, क्योंकि श्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात डेवलपमेंट का रोल मॉडल है। गुजरात को 2.5 दशक से भी अधिक समय से श्री मोदी जी के नेतृत्व का लाभ मिला है और हमने उनकी लीडरशिप में गुड गवर्नेंस के बेंचमार्क प्रस्थापित किए हैं। धौलेरा तथा सानंद में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध और भविष्य की जरूरियात के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का हम निर्माण कर रहे हैं। धौलेरा सानंद में भी चिप मैन्युफैक्चरिंग और गिफ्ट सिटी में डिजाइन एवं फाइनेंस के समन्वय से गुजरात में इस क्षेत्र के लिए एंड टू एंड एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम तैयार है। धौलेरा SIR अब केवल ब्लूप्रिंट नहीं रहा, भारत का पहला सेमिकॉन सिटी बन चुका है। गिफ्ट सिटी में AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और ग्लोबल फिनटेक कंपनियों द्वारा मॉडल लैब्स की स्थापना भी की गई है। हम अपनी लॉजिस्टिक व्यवस्था को आधुनिक बना रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग पूर्ण हो गया है। गुजरात देश का पावर सरप्लस स्टेट है। आज जब विश्व के उद्योग कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन टैक्स को लेकर चिंता जता रहे हैं, ऐसे में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अग्रणी रहते हुए ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के साथ हम गुजरात में सेमिकॉन इंडस्ट्रीज का स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम 2030 तक गुजरात को एशिया का अग्रणी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेमिकॉन इंडस्ट्रीज के लिए युवा स्किल वर्कफोर्स तैयार करने के लिए भी गुजरात कमिटेड है। इस हेतु हम IIT गांधीनगर में 194 करोड़ रुपए की लागत से समर्थ प्रोजेक्ट तहत नैनो फैब्रिकेशन लैब का निर्माण कर रहे हैं। यह लैब हमारा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्यरत होगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज और एकेडमी के संयोग से भविष्य के करिकुलम डेवलपमेंट करने का भी हमारा आयोजन है। सेमिकॉन सेक्टर में गुजरात की बढ़ती हुई इस अग्रसरता से जुड़ते हुए आज इस सेक्टर में 1100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के 8 MOU भी किए गए हैं। मैं सेमिकॉन सेक्टर के सभी निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए तत्पर गुजरात में आपका इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेंचमार्क स्थापित करेगा। सेमिकॉन सेक्टर में न्यू इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज से चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में यह कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल, I would like to thankful to Honorable Minister Shri Ashwini ji Vaishnav on behalf of all the youth from my state. He is the man with vision and mission, a man who is driving semiconductor mission in India. I'm really thankful to you, sir. Honorable Minister Shri Arjun Bhai Modwadia, Chief Secretary Shri Manoj Kumar Das, and all the champions who are on the stage, on the dais, off the dais, I welcome you all to the state of Gujarat. Welcome to the state which is having 5% of India's population, 6% of India's geographical area, a state which is contributing more than 18% of total manufacturing output, a state which is contributing more than 8% in India's total GDP, a state
which is contributing more than 30% of India's total export. A state which is contributing, which is handling more than 40% of India's total cargo. A state which is having ecosystem, a state which is leader in manufacturing diamonds, textiles, engineering, pharmaceuticals, and many other fields. I welcome you all to the land of immense opportunity, emotions, to the land of Gujarat. I welcome you all. कल भारत ने एक नया इतिहास लिखा है। ये इतिहास गुजरात की धरती पे लिखा गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों लोगों का सपना कल साकार किया है। दशकों पहले देखा गया सपना, जो भारत देश के पूर्व में रहे अनेक प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए गए, मैं सभी का आभार मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने देश एवं दुनिया भर में भारत के लिए एक नया विश्वास प्रस्तुत किया है, एक नया विश्वास जो हासिल किया है, उसी के कारण सालों से जो प्रयास किए गए, हर प्रयास कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारणों से हमारे निष्फल जा रहे थे। एक नए विश्वास के साथ, एक नई रणनीति के साथ, नए पॉलिसीज के साथ, मोदी जी के ब्रांड से भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में अपनी मजबूत नींव हासिल की है। और गुजरात में 10 में से महत्वपूर्ण अनेक प्रोजेक्ट हासिल करने में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार को यह सफलता हासिल हुई है। सानंद भारत देश का नया सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। सानंद में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लेके इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भारत सरकार के और खास तौर पे हमारे मंत्री श्री अश्विनी जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार कामगिरी कर रही है। केवल सानंद में ही नहीं, देश एवं दुनिया भर के लिए धोलेरा SIR एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है। धोलेरा में जिस प्रकार से टाटा के द्वारा एक ऐतिहासिक और भारत का सबसे पहला फैब जो धोलेरा में बनने जा रहा है, 95,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये फैब जब तैयार होगा, मेरे देश के और राज्य के हजारों युवाओं को उसमें नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। खासतौर पे कल माइक्रोन के इनॉग्रेशन में जब प्रधानमंत्री जी कई युवाओं को जब मिल रहे थे और संजय जी के साथ जब हमारी बात हो रही थी, और मैं माइक्रोन का इसके लिए आभार मान रहा हूं कि गुजरात एवं भारत के कई युवाओं को अलग अलग देश में भेज के उन्होंने उनको तैयार किया। और जब मैं उनके एक्सपीरियंस सुन रहा था, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था। भले मेरे देश के युवा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये ट्रेनिंग के लिए गए हो, लेकिन माइक्रोन एवं अलग अलग कंपनीज का ये एक्सपीरियंस है, वो जब ट्रेंड होके आ रहे हैं तो और देशों के युवाओं से ज्यादा मेहनत से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये अपने लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आज मैं यहां पे सेमीकंडक्टर की विशेषताओं आपसे सीखने आया हूं, कहने नहीं आया हूं। लेकिन एज एन स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में मैं केवल यही कहने आया हूं कि आप आइडियाज लाइए, आप आपके विजन लेके यहां आइए, आप आपके सपने लेके यहां आइए। आपके सपने साकार करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ हमेशा खड़ी है। आप छोटे से छोटी चीजों में ये पूरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। आपको मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें टाटा और माइक्रोन दोनों हमारे साक्षी बने, और भी कई सेमीकंडक्टर
जो इंडस्ट्रीज है वो उसमें साक्षी है। ये स्टेट गवर्नमेंट ये सुपीरियर या फिर हम ईगो के साथ चलाने वाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। हम आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम को ये मानते हैं कि हम उससे कुछ सीखेंगे, हम उसमें मेहनत करेंगे और आप लोग को रिजल्ट लाके आपके सपने यहां पे कैसे साकार हो उस दिशा में सोचने वाले लोग हैं। हम इगोइस्ट लोग नहीं है कि हमने देश का सबसे सबसे अच्छी तरह से ग्रोथ पाने वाला स्टेट है तो हम क्यों लोगों का सोचें, हम क्यों लोगों का सुने। हम ये सोच के साथ काम नहीं करते हैं। हम हर सुबह हमारे इन्वेस्टर्स के पास से कुछ नया सीखते हैं। हम हर सुबह आपकी कंप्लेंट्स को हमारी ताकत बना के वो काम पूर्ण करके आपको नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। किसी ने होटल्स की कंप्लेन की, हमने बताया कि आप सबसे नजदीक का स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लैंड ढूंढिए, हम वहां पे आपको जब तक हमारी होटल्स का काम कंप्लीट आने वाले 1 साल में वहां पे इतने 1000 रूम्स जब तक बन जाते हैं तब तक आपको जितने भी 5 स्टार फैसिलिटीज के टेंट चाहिए विद इन 60 डेज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। हम ये सोच के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आप सबका गुजरात की धरती पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, छोटी छोटी लुभावनी लालच में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे राज्य में जो आपको मिलेगा वो कहीं पे और नहीं मिलने वाला। ये राज्य में लोगों का प्यार आपको मिलने वाला है। ये एक राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गारंटी आपको मिलने वाली है। ये एक राज्य ऐसा है जो सालों से स्टेबिलिटी के साथ